When you see the syllabus, the pointers are pretty rigidly defined, but to divide them in usable chunks, they have written themes such as in environment, they have written conservation and environmental impact assessment. But to map that theme and the PYQs associated with them, I think that is where the micro theme analysis comes in handy. Also, it really helps in streamlining the syllabus. Apart from the pointers, you have absolutely actionable points on which you can make your notes. So I guess micro themes help in that regard. I began my one pages from the micro themes only. I had these micro themes based syllabus. I guess the PYQs are mapped as per the micro themes. There was this document from Civilsdaily as well of highlighting micro themes with the PYQs. Now I knew that PYQs are paramount, PYQ and syllabus are paramount. And once I got to know that micro themes are mapped as per the PYQs, I knew I had to prepare around micro themes. Then we have to map the syllabus with the PYQs. As we have mapped these two things, as I was saying, the syllabus then PYQs, उसके बीच में जो चीज आती है जो उनको कनेक्ट करती है वो होती है माइक्रो थीम्स. सो उन माइक्रो थीम्स के बेसिस पे ही आप काम कर सकते हैं, बिकॉज syllabus sometimes gets too vast or sometimes gets too narrow, and PYQs are always very detailed, so you can't just make your notes out of PYQ. We need something which gives us an actionable topic, हम उसमें notes बना लेंगे. So that's why we need the micro themes. What are those X-Factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs, it can be Civilsdaily. You need to have that X factor in your answer. With the help of X-Factor Notes, this is the best notes you can have. I used to read their X-Factor notes. The questions are very good, and even the answers were very detailed, and they were, I extracted a lot of content from them. Hi everybody. So as sir has generously introduced me, so I can see like some people here are of 26 batch, for some for 27. So I guess sir has clearly explained the agenda. So let's move on firstly from the micro theme part, which is the basic of your preparation, from where we start, what to do. Then we will move on to, I guess, the notes, the X-Factor note making part, like the things which will separate your answer from the crowd. Then making your own one pages or like whatever you want to call them, so that it gives you an individualized touch to it, so that it does not feel alien to you. And lastly, I guess we can talk a little bit about answer writing as well. Correct. Yes. Akshay, the importance of micro themes, कब आपको लगा कि this is the go-to thing about this preparation, and ये कितना important है? I mean, what is the relevance of micro themes today in UPSC preparation, especially mains? I guess firstly, the journey, my tryst with mains began from the syllabus itself. But I was not, when you see the syllabus, the pointers are pretty rigidly defined. But to divide them in, usable chunks, they have written themes such as in environment, they have written conservation and environmental impact assessment. But to map that theme and the PYQs associated with them, I think that is where the micro theme analysis comes in handy. Also, it really helps in streamlining the syllabus. Apart from the pointers, you have absolutely actionable points on which you can make your notes. So I guess micro themes help in that regard. And yes, first, when I started the preparation, I was totally clueless about all this stuff. But as I joined mains and I caught the wind of this buzzword called micro themes, I realized the cruciality of this in the preparation and preparing the notes based upon those micro themes. So I guess, yeah. Correct. As you can see in your screen, Lakshay, I think you can elaborate this. Yeah. So, firstly, beginning from this, as we can see the GS paper one right now. So these guys have written the syllabus pretty vividly, but to map the syllabus to the PYQs, there is this one interlinking theme of micro themes. So as we can see that the micro themes are basically the bridging gap between the syllabus and the PYQs. And as we all know, the cruciality of PYQs, how important these are in our preparation, because otherwise you are in a rudderless ocean. You really need some basic points on which to make your own notes. And by notes, I basically mean कि क्या चीजें prepare करना exam के लिए, right? So if you go just by syllabus, you will again find yourself in a bit of a non-guided ocean. जैसे society के अंदर उन्होंने 6 point दे रखा है कि salient feature of Indian society and diversity of India. Now diversity के अंदर
काफी सारी चीज आ सकती हैं, linguistic diversity, regional diversity, even food diversity. But as we can see the micro themes, इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ दो चीजों पे आए हुए हैं, प्लूरलिज्म पे, लाइक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एंड सेकेंडली इज फैमिली, कि वो मैरिज वाले क्वेश्चन या मैरिज इज अ सैक्रामेंट वाले क्वेश्चंस. So this is what micro theme helps you. It gives you actionable pointers जिस पे आप अपने notes I guess बना सकते हैं. So इसके अंदर जैसे हमने GS1 का देखा, we can really see these micro themes, और उसके ऊपर अपने जो भी notes हम बनाना चाहें given from the X-Factor notes, उसके basis पे we can make these notes. जैसे इस वाली micro theme को देखते हैं जो अपना freedom struggle movement है. Now freedom struggle movement के अंदर once you have this theme, you know what all should be in my notes. Like, of course, we have this PYQ of QIM. Now, अगर एक बार क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया है एग्जाम में, I automatically know कि मेरे पास स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर भी नोट्स होने चाहिए, मेरे पास सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर भी नोट्स होने चाहिए. एंड नॉट ओनली दैट, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, आई शुड ऑल्सो नो द बैकग्राउंड एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द what was the impact of that movement. So it really pinpoints your preparation. Otherwise, you will be lost. कि freedom struggle इतना बड़ा था. It began like since Sannyasi revolt till 1947 का जो था end तक. Otherwise, you will be spent in all that. Now you have this theme and you can actually know कि मुझे किस stage पे क्या notes बनाने चाहिए. You have actionable insight. पहले कि भाई मेरे पास मुझे notes चाहिए कि मैं suppose पहले जो मॉडरेट एरा था मेरे पास उसके कुछ नोट्स होने चाहिए कि मॉडरेट एरा में क्या हुआ. देन यू शुड हैव सम नोट्स ऑन स्वदेशी, देन मुस्लिम लीग, देन होम रूल लीग, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन आया. सो यू शुड हैव दिस एक्शनेबल नोट्स ऑन एवरी सिंगल थीम. और ये आपको काम बहुत सिंपल कर देता है वंस यू हैव दीज पॉइंटर्स कि मुझे इन पॉइंटर्स के आसपास ही नोट्स बनाने हैं. सपोज आपने स्वदेशी थीम उठाई, या ये एग्जाम्पल लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट उठाया. सो यू विल टेक क्विट इंडिया मूवमेंट की कब शुरू हुआ, उसका ईयर लिखा, कौन कौन स्पेशल पर्सनालिटीज थी, कि भाई अरुणा आसफ अली थी या उषा मेहता थी. आपने वो लिया, एक छोटा सा मैप बनाया कि फ्लैश पॉइंट्स क्या क्या थे उस मूवमेंट के, कि भाई ग्वालियर टैंक पे वो फ्लैग होइस्ट किया था उन्होंने, और जो जातीय सरकार जो लाइक पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी उस टाइम पे आई गेस, वो चीजें लिखी, उनको अपने छोटा सा मैप में नोट किया, और उसी के आपने वन पेजर जिसे हम कहते हैं यूजुअली, वन पेजर 2 पेजर नोट्स बना लिए. एंड दैट बिकम दैट उसके 2-3 पेजेस ही आपकी यारी माइक्रो थीम बहुत सॉलिड तरीके से तैयार कर देंगे. नाउ एज सून एज यू सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, यू नो कि क्या क्या लिखना है. इनफैक्ट लाइक लेटर ऑन व्हेन वी सी माय नोट्स, मैंने तो इसके इंट्रो कंक्लूजन्स भी तैयार कर रखे थे स्पेसिफिक टू ईच माइक्रो थीम. सो दैट रियली हेल्प्स यू, क्योंकि 7 मिनट मिलते हैं आई गेस, एवरीबॉडी नोज हर आंसर को लिखने के लिए. एंड वंस यू हैव दिस, इट रियली सॉल्व्स योर इशू कि आइडिया जनरेट नहीं हो रहे या पॉइंटर जनरेट नहीं हो रहे, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस. जो भी इंसान मेंस लिख रहा है, एवरीबडी नोज क्विट इंडिया मूवमेंट, सबने प्रीलिम्स निकाला है, सबने पढ़ा है बेसिक स्टफ. बट जिसने वो माइक्रो थीम मैप की हुई है उसके हिसाब से नोट्स बना रखे हैं, आई गेस दैट पर्सन विल विन द केक इन द एंड. सिमिलरली आप देखोगे GS2 GS3 में भी सेम चीज है. लाइक इस पे आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते बिकॉज आई थिंक ये बहुत अंडरस्टूड है. सिमिलरली जैसे GS1 था, हमने GS2 GS3 GS4 सबकी माइक्रो थीम्स मैप करके आपको ये दिखाने के लिए बताया है कि देखो क्वेश्चंस आर रिपीटिंग. ओके, पिछले 12 साल से इट्स अलाइन्ड. करेक्ट. द फंडा इज Lakshay that they only need 288 micro themes to prepare, and Yes. out of which these 288 micro themes can be further divided into 177 mains and 111 prelims, and 288 वो हैं जो जिस पे 2 से ज्यादा क्वेश्चंस आए. Unmute. Yeah, that's what I was saying कि जो themes हैं वो overlap कर रही हैं. Like you see in GS1, the modern history themes are pretty much overlapping with each other. So even if you prepare those themes alongside prelims and mains, of course एक orientation change हो जाता है पढ़ने का mains और prelims के बीच में. But if you can study smartly, तो mains के साथ साथ prelims की पढ़ाई के साथ साथ आपका mains का भी चीजें रिवाइज हो सकती हैं. Like people when they will switch to prelims in say January, तो जब आप prelims के अंदर
वो सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गई, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये बेसिक चीजें हो गई, तो वो चीजें आपकी साइमल्टेनियसली रिवाइज होती जा रही हैं, एंड आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. Absolutely. See, it looks huge, but it is not, because see, if you look even example of polity, आप देखो कि इतनी माइक्रो थीम्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए, राइट? अगर आप इनको एक्शनेबल 20 days में भी डिवाइड कर दो, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो. And again, if you study smartly, you can really expedite this process, because एक बार ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपको बहुत कंटेंट हैवी चीजें नहीं है. दिस इज नॉट वेरी कंसेप्चुअल. जैसे अटॉर्नी जनरल पे इस बार क्वेश्चन आया था 2025 में. इफ यू नो द बेसिक स्टफ, you can really write a good 2-pager answer on it. So this is, again, I would say it's a one-time investment, क्योंकि दोबारा के successive revisions will be very much easier once you have this fodder content, as I would like to say it. अगर वो ready है, then it really makes the journey ahead very easier, and like by default it will make your UPSC journey very much easier. राइट. सो बेसिकली आपको माइक्रो थीम से ही शुरू करना है, ठीक है? चाहे आप किसी भी स्टेज से स्टार्ट करे हो, PYQ से भी एक लेवल ऊपर जाके आपको माइक्रो थीम से स्टार्ट करना है your preparation. Now, I think Lakshay, you can tell about your own notes. Yeah, so as I was speaking earlier, कि if you have those, जैसे सर ने भी बोला कि PYQ से भी ज्यादा important माइक्रो थीम हो जाती है. Now that is perfectly right, because a PYQ will give you what has already been asked. Now हो सकता है कि वो दोबारा पूछ ले सेम चीज, but it is very much likely कि वो उस चीज के सराउंडिंग क्वेश्चंस पूछे. लाइक जैसे पहले क्वेश्चन आया था एक बार GS3 के अंदर अबाउट ट्रिपल P इन रेलवेज. नाउ आई नो बाय डिफॉल्ट कि ट्रिपल P इन रेलवेज अगर उन्होंने एक बार पूछा है, तो नाउ दे कैन आस्क ट्रिपल P इन एयरपोर्ट्स और ट्रिपल P इन सी पोर्ट्स, और उन दोनों में से एक ट्रिपल P इन एयरपोर्ट्स दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड. तो इफ समबडी न्यू, जो ट्रिपल P इन रेलवेज को पढ़ करके वो समझ गया ये बात कि ट्रिपल P इन एयरपोर्ट्स एंड ट्रिपल P इन सी पोर्ट्स भी पढ़ना चाहिए, दे हैव ऑलरेडी गेन्ड एन अपर हैंड with everybody else, from everybody else. So PYQ आपको एक pinpoint चीज बताएगा, but micro theme आपको उस चीज का एक holistic coverage करने का मौका देंगी. Now let's see, जैसे crop and pattern के मैंने notes बनाए थे, तो I saw what all could be asked from this particular theme, और उसका मैंने ज्यादा कुछ नहीं, उसके एक सिर्फ छोटी छोटी चीजें पॉइंट की. Now this is very personalized stuff. Even if you have those X-Factor notes with you, these one pager only you can make. आपने एक बार जो भी आपका X-Factor मटेरियल आपने वो पढ़ा, आपने उसको लर्न किया, रिवाइज किया. नाउ किताब को बंद करके साइड में रखना है. व्हाटएवर यू कैन रिकॉल फ्रॉम इट, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज ओनली दिस विल गो विद यू इन द एग्जाम हॉल. जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है 3 घंटे का, उसके अंदर आपकी मसल मेमोरी ही काम आती है. यू नो, यू कैन रीड एन नंबर ऑफ बुक्स, बट जो चीज आपके हाथ से पहले नहीं लिखी हुई, व्हाई डू पीपल से कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज चीज को पढ़ना बुक से एक अच्छे कंफर्ट जोन एनवायरनमेंट में अलग चीज होती है, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर उस चीज को एग्जाम की बुकलेट पे रेप्लिकेट करना इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम. You can learn as much as you want, you can revise as much as you want from the book, but unless आपने वो प्रेशर मोमेंट में अपने दिमाग से रिकॉल करके नहीं लिखा, यू नो, जैसे कि कोरे कागज पे लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है. सो वंस यू डू दैट एट योर होम, कि आपने घर पे बैठ करके, नाउ ऑल ऑफ दिस आई हैव रिटन इज इट्स मेजरली माय ओन रिकॉल. ये कहीं से देख के नहीं लिखा. अगेन, जो भी चीजें जैसे मैं भूल जाता था तो उसको ऊपर से ऐड कर लिया. जैसे लाइक you can see this cross वाला ग्राफ, ये जो 12 अनाज के नीचे लिखा हुआ है. now this is an external addition, I still remember. इसको ये मैं भूल गया था बनाना, तो मैंने इसको बनाया. now this is something which shows कि जो अपना क्रॉपिंग पैटर्न है उसके अंदर वीट का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा है since 1951, and this is a very good value addition. now if I need to show, शायद मैंने एग्जाम में भी बनाया है. now this one graph can be used anywhere. जहाँ दिखाना है कि सपोज वाटर डिप्लीशन हो रहा है, तो आई कैन शो कि भाई राइस वीट की डोमिनेंस बढ़ी है, दैट इज व्हाई वाटर डिप्लीशन हो रहा है. या फिर दे आर शोइंग कि मोनोकल्चर के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो आई कैन शो दिस ग्राफ ओनली. नाउ इफ यू हैव दीज वन पेजर इन योर हैंड before the one day before the exam,
then it becomes very much easy to revise, क्योंकि पहला ये आपकी खुद की राइटिंग में लिखा हुआ है. Now जैसे मैंने ये शब्द लिखा है, जैसे YRW system, why rice wheat system. I know firstly this is green revolution. I know कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि कल्याण सोना और पूसा की जो वेराइटीज थी, those were water guzzling varieties. उसकी वजह से राइस व्हीट सिस्टम हुआ, like these were high yielding varieties, उसकी वजह से राइस व्हीट सिस्टम आया. Then MSP, then irrigation support. Now I know the back linkages behind each word. If anybody just takes these notes, they may not be able to use them, but I know the backward linkage of all these words. So I know कि मुझे क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते ही क्या लिखना है, along with value addition, which is like this graph, or like इसका solution भी लिखा हुआ है 12 अनाज in उत्तराखंड. So what this helps is, what I want to show with these notes is कि once you create this, it really makes your life very much easier. Now how to create this? You read your X-Factor materials, your X-Factor notes. Those are very much replete with data and facts and examples. उसको आप लर्न करें, रिवाइज करें, एक कोरे कागज पे, ब्लैंक पेपर पे खुद से लिखें, एंड वंस यू डू दैट फिर उसी को रिवाइज करें. जैसे ये बायोलॉजिकल, now you can see on the top right side there is biological IFS. This was a scheme in United States, and this is a very good case study to add in integrated farming system पे the question आए. और if you add these small things, यही चीजें आपको एक एक दो नंबर एक्स्ट्रा देके जाती हैं. और ये एग्जाम की हीट में आप सोचो कि अगर आपने बुक पढ़ लिया आपको रेप्लिकेट हो जाएगा, तो नहीं होता. बट सिंस आई हैव पुट दिस इन माय नोट्स, इनको बार बार रिवाइज किया, only then it will come to me in exam. And if examiner gives me 1 or half, even half marks extra in all those 20 questions, तो 10 मार्कर वो आपको लिस्ट के बाहर से लिस्ट के अंदर, और लिस्ट के अंदर से IAS तक, like you know कि आधे आधे नंबर की रेस है. So this really helps. That's what I wanted to show you with the notes. So yeah, and these encompass everything. आप चाहे पढ़ कितना भी लें, बट जो नोट्स में नहीं है वो नहीं रेप्लिकेट हो पाएगा. दैट इज वाई. और ये नोट्स अपने इंट्यूशन से बनाना इज बेटर, कि लाइक याद करके खुद से लिखना इज बेटर. अदरवाइज इफ यू नो ओपन द बुक एंड देन स्टार्ट राइटिंग, देन व्हाट वी एंड अप डूइंग इज कि हम नॉनचलांटली पूरी बुक ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं. बट वंस यू हैव रेड योर X-Factor मटेरियल एंड यू हैव गेन सम इनसाइट्स फ्रॉम इट, या आपने लर्न कर लिया है. Suppose let's take an example ki like these notes are from X-Factor material only, like verbatim. Like firstly I was showing you cropping pattern के notes. उसके अंदर क्या था कि I learned the material by heart. उसके बाद जितना याद रहा उसको मैंने इसी पे ब्लैंक पेपर पे लिख दिया. उसके बाद उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका जो कोर आइडिया है कि भाई इसके प्रोज क्या क्या है, तो उसके वन टू वर्ड्स. और अगर मुझे कोई एग्जांपल अच्छा लग गया कि मैं एग्जांपल कोट करूंगा, तो वो मैंने लिख लिया इसके अंदर. नाउ दिस इज टोटली एन ऑर्गेनिक एक्सरसाइज. ये सिर्फ मेरी पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज है. इवन दो कोई कुछ भी पढ़ करके आ रहा हो, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन एटलीस्ट दीज मटीरियल. और मुझे ये पता है कि ये नोट सफिशिएंट है क्योंकि ये माइक्रोथीम बेस्ड है. और माइक्रोथीम इसलिए सफिशिएंट है क्योंकि वो PYQ और सिलेबस बेस्ड है. सो आई नो कि ये पूरा बैकवर्ड लिंक्ड है, और मैं कुछ भी irrelevant stuff नहीं पढ़ रहा हूँ. Right? This stuff is enriched, relevant, precise, or recallable. Like it has all those qualities which I need to replicate in the exam. And this is what I'm talking about. Like I have made notes of even the economic survey. So what I'm trying to highlight with this is कि जिस भी चीज के आप notes ना बना सके मेंस में, I don't think that you should study. Because if you don't make notes out of it, I feel that it is irrelevant to study from it, because आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. और याद करना एक अलग चीज होती है, एग्जाम की हीट में उसको रिकॉल करना एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम. सो लाइक इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 500 पेजेस के आसपास का होता है, एंड मैंने उसको आई थिंक अपने नोट्स के अंदर 6-7 पेजेस में समराइज कर दिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या बनाना है. Like there was this question on trends of public sector spent in social sectors. It was, I think, the first question in 2024 का GS3. तो I thought कि अगर उस पे क्वेश्चन आ सकता है तो शायद इन्फ्लेशन के ट्रेंड पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो I took this graph, like the inflation graph from the 4th section, और मैंने उसको ही अपने
नोट्स पे बना लिया कि अगर इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आया तो मैं उसको यूज कर लूंगा. नाउ GS3 में क्वेश्चन नहीं आया, बट मेरे ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको वहां यूज कर लिया. सो what I'm trying to highlight is कि firstly see the syllabus and the PYQs. उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो थीम बेस्ड ही माइक्रो थीम्स डिराइव ही उससे हुई हैं जो यूपीएससी का अपना ऑथेंटिक मटेरियल है. यूपीएससी ने दो ही चीजें दी हुई हैं हमें, PYQs और सिलेबस. ना उसको हमने सिंथेसाइज करके एक माइक्रो थीम बना ली. अब हम उस माइक्रो थीम को पकड़ करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. उस माइक्रो थीम के आसपास जो भी चीजें आ रही हैं, सपोज क्रॉपिंग पैटर्न है, तो हमने क्रॉपिंग पैटर्न की कि भाई करंट स्टेटस क्या है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है, व्हाट आर द इनोवेशंस की अब हम मिलेट्स पे या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं. उसके बाद की चैलेंजेस क्या क्या है कि भाई MSP है या पॉलिटिकल विल नहीं है. उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, थोड़ा डेटा क्या है, कुछ इंटर कंक्लूजन मिल जाए. बस इन चीजों को पकड़ करके हमको पता है हम नोट्स बना लेंगे. इसी के आसपास क्वेश्चंस आए हैं आज तक, इसी के आसपास सिलेबस है और आगे भी ऐसा ही होगा. नाउ I just want to give you a very brief highlight कि how this happened with me in the real exam. जैसे इस बार I think question 5 was किया था या 4 था. It was about scope of food processing sector. Now this is a clear theme in the syllabus, and I guess there is a micro theme also about food processing. I had my one-pager notes very much ready on food processing, along with the intro, conclusion, scheme, graph, and I just copy-pasted it out of memory, and it was so satisfying. I finished that question in, I guess, 5 minutes, along with the graph, along with every single scheme, etc. In the end, the conclusion was absolutely apt. So these are the things which help you gain marks, not only in that question, but since आपका वो question जल्दी खत्म हुआ, confidence build हुआ, तो आप next question में भी momentum carry करते हो, तो उसके अंदर भी आप better perform करते हो. So I guess these things highlight, like I can't stress it more, that micro themes are paramount, and your one pager made out of those micro themes are what's gonna ensure your selection, I guess. अच्छा, बीच में लक्ष्य आपने इस एक्स फैक्टर का यूज कैसे किया विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी कंटेंट आपके पास था, फिर वैल्यू एडेड कंटेंट आ गया, फिर आपने एक अपने वन पेजर में कैसे जुडिशियसली दोनों को यूज किया? I began my one pagers from the micro themes only. So I had these micro themes based syllabus. I guess the PYQs are mapped as per the micro themes. There was this document from Civilsdaily as well of highlighting micro themes with the PYQs. Now I knew that PYQs are paramount, PYQ and syllabus are paramount. And once I got to know that micro themes are mapped as per the PYQs, I knew I had to prepare around micro themes. Now, secondly, we have the X-Factor notes. X-Factor notes are pretty comprehensive, not just in content, but what I would say, differentiated content. Because suppose everybody knows some used and very much abused examples, right? If everybody is writing the same examples, I mean, that will not create an awe factor in your answers, like what we call X-Factor. So I use those notes. तो पहले मैंने सिर्फ उन्हीं नोट्स को लर्न कर लो, या फिर like I read them again and again. So like जैसे पॉलिटी था, तो पॉलिटी के अंदर I just read them. But in Indian economy and GS3, since GS3 is very technical paper, उसके अंदर I had to do some sort of learning by heart. Now these I guess 100 pages or 200 pages of notes is not something which I can carry forward. So I took my notes out of them only. I learned the topic and I made one pager out of it. Not by the idea कि मैं one pager ही बनाऊंगा, but suppose any topic I learned, उस पे जितना recall हुआ वो लिखा and I moved forth. So yeah, this is exactly the idea of X Factor also, and of course you have to selectively use it in your own one pager note format like Lakshay used. Correct. So Lakshay, I think you can now also flash notes is something that will be helpful for prelims. So we can talk about this in some other session. Let's see, this is the crux because you all are asking for a rankers one pager note. अभी सेशन के बाद सब कहेंगे लक्ष्य सर के नोट दे दो, लक्ष्य सर के नोट्स दे दो. इससे पहले वाले रैंकर्स जो अभी रैंकर है वो कहते थे श्री लक्ष्मी मैम के नोट्स दे दो, श्री लक्ष्मी मैम के नोट्स. ऐसे नहीं होता, आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है? अदरवाइज आप किसी भी रैंकर का मटेरियल कॉपी कर लो,
नहीं होगा आपसे, बिकॉज एक आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आपको पता है, आपने वो याद करके लिखा है। जैसे इन्होंने बताया क्वेश्चन को पूरा याद आ गया वहां पे, 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इन्होंने खुद लिखा था, वो किसी के कॉपीड मटेरियल नहीं था। इन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से बनाया है, वो अलग बात है, बट इनका मटेरियल था वो, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. Lakshya, please explain them how to make one-pager notes, I guess. This is the next thing we can start. So, guys, firstly, of course, everything begins from syllabus. Without the syllabus, you should not even be here. Right? That as soon as you have, you know that you have cleared your prelims, you should firstly start mapping up this, because I'll explain why knowing the syllabus on your tips is very important. Because suppose anything that you are reading, you are reading a newspaper, you are reading any material, you will know exactly where that particular content fits in your mains preparation. Otherwise, you are just collecting stuff. You are becoming a human version of a Google without having been able to use it in your exam. So syllabus mapping is very important. Now since we have in GS4 we have just one subject, but in GS 1, 2, 3 we have multiple subjects. GS1 comprises of art and culture, history, society, post-independence world history, geography. So we need to break the GS papers into manageable chunks of subjects. And as we have done that, then we have to map the syllabus with the PYQs. As we have mapped these two things, as I was saying, the syllabus, then PYQs, उसके बीच में जो चीज आती है जो उनको कनेक्ट करती है, वो होती है माइक्रो थीम्स. सो उन माइक्रो थीम्स के बेसिस पे ही आप काम कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस sometimes gets too vast or sometimes gets too narrow, and PYQs are always very detailed. So you can't just make your notes out of PYQ. We need something which gives us an actionable topic. हम उस पर notes बना लेंगे अपने, right? So that's why we need the micro themes. So now we have anti-defection theme. Anti-defection के ऊपर कई बार questions आ चुके हैं. Now they are asking, firstly they used to ask the technical aspects of ADL, the amendment, 52nd, etc. Now, since they are moving towards the philosophy of the constitution, as Shubham Jatte sir might have explained you all in his PYQ analysis, now they are moving towards the philosophy of ADL, right? So we have got these our notes here. Now I'm going to show कि इस notes से अपने वो 1 pager तक का सफर कैसे तय करें, right? So we have got these ADL के notes. Now firstly it explains us की जो technicalities हैं. So suppose मैंने ADL पढ़ना शुरू किया. Now since I have cleared prelims, I suppose we all know some technical background to it. We know the 52nd Amendment, 91st Amendment. Now as we read this ADL from the notes, what we will try to do is we will try to capture whatever we can from the notes. Suppose I will learn the grounds for qualification, disqualification, then the exceptions, and I will write them down in my notes after learning. Like I will not write down verbatim from this. I will learn from these 4 points are the disqualification grounds. I will write these down in my notes. I will make a line, then write disqualification. 4 pointers बनाए. ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ 2-4 वर्ड्स लिखे कि if a nominated candidate joins a political party, if an independent candidate joins a political party, or nominated candidate post 6 months joins a political party, या फिर party line के against vote किया. So I will just write down this in my notes and move ahead. Then जैसे इसके अंदर काफी डिटेल चीजें दी हुई हैं. These are just for your own understanding. Of course you can't suppose significance के ऊपर क्वेश्चन आता है. So जैसे नीचे significance का कॉलम है, we can't replicate these 5 points verbatim. We can just hardly write जो भी जो bold में दिया हुआ है. So what I'll do is I'll learn this. I'll just write जो भी bold में दिया हुआ है in my own language, not in the language of X-Factor Notes, because that is written by somebody else. I need to make this my own individualized content. So of course I will use the keyword जैसे horse trading लिखा. So it's a nice keyword. It differentiates my answer. So I will of course write horse trading, but I will write this curbs horse trading, या जो भी मेरे दिमाग में उस वक्त वो आएगा शब्द. I will not verbatim write combating corruption and horse trading. So this is how I will create 1 pager out of ADL. इसके साथ में I guess we can turn the page.
या जैसे कोर्ट के जजमेंट्स आए हुए हैं, नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच विल डिफरेंशिएट योर आंसर्स. तो मैं जो भी इसके केस लॉज है, आई विल जस्ट इन माय नोट्स मैं नीचे कॉलम बनाऊंगा केस लॉज का, उसके ऊपर जैसे हाफ मून बनाया, उसके 4 पॉइंट्स निकाले कि रवि नाइक वाले जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला था, देन कीहोतो होलोन, देन जो सादिक अली वाला केस है, ये 3 केसेस लिखे, एक छोटी सी लाइन में लिखा कि क्या क्रक्स क्या था. जैसे रवि नाइक वाले के अंदर बोला गया था कि वॉलंटरी गिविंग अप वाली चीज लिखी हुई थी. आई जस्ट मेक माई नोट्स रिगार्डिंग दैट. और वे फॉरवर्ड के अंदर वही 4 चीजें दिनेश गोस्वामी कमेटी या लॉ कमीशन ने क्या बोला है, ये चीजें मैं लिखूंगा. एंड लास्ट में आई गेस यहाँ पे मिसिंग है, आई विल ऑल्सो गिव अ कंक्लूजन दैट द कॉन्शियंस ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन, या बाकी नोट्स के अंदर दिया होता है कि आई गेस एक्सट्रैक्टर नोट्स में ही आगे दिया होता है B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, या जो भी है, इन चीजों को हम लिखेंगे. एंड देन दैट विल कॉम्प्राइज 1 पेज नोट्स. उसके बाद मैं ADL के एक बार सिर्फ प्रिकॉशन के लिए PYQs देख लूंगा कि क्या वो PYQs मेरे नोट्स से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं. अगर आपके नोट्स सॉल्व हो रहे हैं, लाइक समबडी वाज आस्किंग कि आर दी सफिशिएंट और नॉट, तो वो सफिशिएंट का आपको प्रमाण तभी मिल जाएगा कि अगर आपके नोट्स से PYQ सॉल्व हो रहे हैं, देन दीज आर सफिशिएंट. अदरवाइज ऑफ कोर्स if you are making them from the exact notes, I guess that solves your purpose. Correct. So we have here our integrated farming system ka notes, right? So now we have these notes in front of us कि आपको advantages पता चले, right? Now I will read these. Firstly, I will read the definition, simple definition. Of course, this definition looks smaller in the print, but अगर आप इसको लिखने जाएंगे, then this will take a lot of space. So what I will do is कि I will read this definition, not mug it up, but of course I will learn the keywords such as, there's this comprehensive approach which combines crop production, livestock, aquaculture. That's it. To maximize resource efficiency, I will just learn these few things. Then there is advantages. Advantages में क्या चीजें हैं? Increased income by reducing dependency. I will write only this one line in my notes. Secondly, what I'll do is जो भी चीजें जिसे diagram दिया हुआ है, components of IFS. So this will add some form of visual appeal to my answers. तो मैं इसको भी अपने notes में बना लूंगा. Of course छोटा सा लिखूंगा components, and then I will write this livestock, aquaculture, sericulture. That's it. Then इसके अंदर माइक्रोथीम्स में एक्सफैक्टर नोट्स की बात सबसे बढ़िया ये है कि इसमें नोट्स इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं. सो यू सी 12 पॉइंटर्स. नाउ 12 पॉइंटर्स लिखे भी नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में. तो व्हाट आई विल डू इज कि इसमें से मुझे जो भी पॉइंट्स लगेंगे कि दीज आर द मोस्ट हाई वैल्यू पॉइंट्स, आई विल ओनली लर्न देम, और बाकियों को मैं एक बैक ऑफ द माइंड रख लूंगा कि अगर मैं भूल गया तो व्हाट आई हैव टू डू. सो इवन इफ यू सी माय नोट्स, उसके अंदर भी मैंने जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, I have just written one word, like I'll do one ऊपर वाला arrow, then income. Secondly, I'll write efficient resource utilization, soil health, water. या फिर मैं सिर्फ लिखूंगा soil, above वाला mark, then water, then pest, then risk. That's it. I will just write these things and I will move forward. Can we turn the page? Yeah. So now you see biology. Now I had shown you this in my notes that I had highlighted this of the BIFS program. ये चीज exactly मेरे नोट्स में दिखेगी आपको, और मैंने यहीं से ही वो चीज इंस्पायर्ड है कि I made these notes, but मैं ये चीज बार बार भूल रहा था. This is a best practice that you should add in your agriculture answer, because agriculture के answers बहुत ही bland होते हैं. Everybody writes the same things कि MS कम कर दो या organic farming या all those things. These things in terms of best practice हो गई या state की best practice हो गई. This is what we call X-Factor, जो आपके आंसर्स को डिफरेंशिएट करता है. सो वो चीज मैंने यहीं से उठाई थी, एंड आई रोट दैट वर्बैटिम इन माय नोट्स कि बायोलॉजिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम USA की. तो इफ दिस क्वेश्चन हैड कम इन माय एग्जाम, तो मैं बस वो बॉक्स बनाता साइड में, BFS in USA can be adopted. That's it. And that would have been giving me an edge of like 0.5 or 1 mark, and that would have made all the difference between selection and non-selection. So I guess that should show you how to make X-Factor notes from these more plus size notes. And this is, as you can see, जो मैंने बोला कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की एक थीम है, तो आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है उसके ऊपर.
क्वेश्चन किस डायरेक्शन से आ सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, कि व्हाई डू वी नीड टू डू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसके आपके पास यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन अडॉप्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, और वे फॉरवर्ड। दैट्स इट। ये इन्हीं पॉइंटर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, और यही पॉइंटर्स आपको एग्जैक्टली एग्जाम में रेप्लिकेट कर देने हैं। और वो रेप्लिकेट कब होंगे, जब आप इन नोट्स से इंस्पायर होकर के अपने 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। बिकॉज अगेन इन नोट्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना इज अ बिट चैलेंजिंग टास्क, लेकिन एज आई शोड यू माय नोट्स, उस चीज को रेप्लिकेट करना, एज यू गाइस वुड एग्री, इज मच मोर इजियर। तो वही फंडा है, माइक्रो थीम से शुरू करो, नोट्स बनाओ। उस नोट्स में ऑफ कोर्स यू कैन ओपन अप उन्हीं माइक्रो थीम के नोट्स बनाने, यू कैन ओपन अप एक्स फैक्टर, यू कैन ऑफ कोर्स यूज दिस मेथड, देन टू वेरीफाई कि आप सही डायरेक्शन में हो, गो एंड लुक एट PYQs। उसके बाद आपका एग्जाम रेडी है, फिर आपको बस 1 पेजर बनाना है उसका। Exactly, that is the drill. Take the micro theme, prepare the learn the X-Factor notes, make your 1 pages, and then do the drill, answer writing, etc. Or answer writing, when you do then that will be so much more easier, because what are you doing in your 1 pager? Suppose आपने ऊपर लिखा crop diversification, उसके ऊपर लिखा फिर advantages, 4 advantages, challenges. Now question इन्हीं dimensions में से आएगा, and as you see the question, you know where to hit the nail. Or I guess that is what will ensure your selection. That's it. I think that was pretty comprehensive session. Thank you so much for your time, Lakshay. It was great hosting you. We'll see you again probably with your written notes, where you are able to write something and explain. Probably an offline session we can figure out. But thank you so much for your time. These 45-50 minutes, I'm sure, was very helpful for these students. And of course, they are excited about your success. They are wishing you success and congratulating you. Thank you. Great. Thank you so much, Lakshay, for your time. Thank you.